So now we will talk about clinical approach of hepatobiliary disorders, how to do and how to proceed. See, when parents comes to you and say, my child has got the jaundice, then what you say? You will believe in patient words or whether you will go for the examination. So you should not believe on the words of the patient. Of course, it is the patient's wordings. It needs to be get confirmed. Okay, because always the yellowish discoloration is not jaundice. Okay, for patient it is jaundice. For doctor, it is not always jaundice. So then you ask, what do you mean by jaundice? Suppose when the patient himself is coming or mother is coming and telling to you that, sir, my baby is having jaundice. Now the next question that you have to ask is, how you come to know that there is a jaundice? What make you to think about the jaundice in this child? So then usually the mother say, sir, palm is yellow and his sclera is also yellow. See, his skin is also yellow. Yes, normally patient say like this. Now, now you have to confirm that this particular jaundice, whether it is clinical jaundice or non-clinical jaundice. What is the meaning of clinical jaundice? Or what is the meaning of non-clinical jaundice? Because the yellow discoloration is also possible in case of keratonemia, isn't it? Now this is not clinical jaundice, this is non-clinical jaundice. Yellowish discoloration sometime palm, suppose if you see the palm also sometimes looks very yellow sometime because of some vasoconstriction, etc. Suppose the patient is worried, patient is under stress, or sometime extreme exposure to cold, the palm area looks very um, paler or even yellowish. Okay, so now this is not clinical jaundice. Okay, so even a patient of a patient recovering from the fever also, if you see, the palm area is quite yellowish. Okay, now these are all because of some of the vasoconstriction, sudden vasoconstriction which is taking place. In cold season, this is quite common. And these things are not considered as a clinical jaundice. They are all considered as a non-clinical jaundice. Even in case of severe anemia, when the patient is having severe anemia, then also you will have this particular jaundice-like feeling. Okay, so these things are not considered as clinical jaundice. Only one which is occurring because of the hemolytic problem or a hepatic problem or obstructive problem, if the jaundice is there, then it is, and the direct bilirubin rises or indirect bilirubin rises, then only we can say that it is a clinical jaundice. Now, when the child comes with a jaundice, first differentiate between the hepatocyte and the biliary. Okay, this is the approach. ठीक है, अब आप जाएंगे तो ये होता है अप्रोच. ठीक है, सब कुछ एक साथ करना नहीं है. तो जब मदर बोल रही है कि जॉन्डिस है मेरा बच्चे को, सबसे पहले आप डिफरेंशिएट करो कि वो नॉन क्लिनिकल जॉन्डिस है या क्लिनिकल जॉन्डिस है. ठीक है, नाउ इफ इट इज क्लिनिकल जॉन्डिस, then you go for the next step, differentiate between the hepatocyte and biliary. Now you know how to differentiate the hepatocyte and biliary. Okay, because hepatocyte cause of jaundice may be three. One is infection like hepatitis, etc. Another one is infection with the biliary tract obstruction. Number three, everything is fine, only enzyme deficiency is there. Okay, now you have to differentiate between these three. Now, in the hepatic, with the infection being the cause, always the child is sick looking, and also you will have some other symptoms like fever, body pain, etc. Okay, so in the hepatic jaundice, the child is sick if it is because of infection. Hepatic jaundice, the child is not sick if it is because of enzyme deficiency. Okay, hepatic jaundice, the child is not much sick if it is because of the obstructive jaundice. But you will have some other symptoms also associated with that. Okay, now hepatic jaundice, suppose it is a hepatic jaundice. Now, if it is hepatic jaundice, two possibilities are there. What is that? One is a hepatic jaundice which is very acute, and another is hepatic jaundice which is chronic. Now, if the hepatic jaundice is acute, then you will have a short history of 5 days, 6 days, or 7 days, etc. Okay, so you will have that particular history, and there will be some associated symptoms like fever, vomiting, abdominal distension, lethargy, etc., as it occurs in case of hepatitis A, etc.
That is hepatic jaundice. Child is sick looking, hepatic jaundice, but onset is acute. Another is hepatic jaundice. The onset is very chronic. Onset is very chronic. So this is liver disease causing the jaundice, and there will be liver enlargement, or also sometime even there will be spleen enlargement also. Now there is a jaundice. Child is sick looking also here also, but the liver is also enlarged. Okay, and even sometimes spleen is also get enlarged. What it suggests, when liver is also get enlarged, it suggests it's a chronic. It's a chronic. It's not acute. Fever, etc. symptoms are not present. It would have been present in the beginning, but now it is not present. Okay. So in the hepatic, again you have to differentiate into acute and chronic. How to differentiate? In acute, yes, all the symptoms will be there. Short history will be there, and again the child is sick looking. And in the chronic, there's a long history will be there, and you don't have much other symptoms like the fever and body pain and all, because it's adjusted for that, compromised. And you'll also have the liver and as well as spleen enlargement, and child is sick looking, but it is not as sick looking as that of the acute. ठीक है, बच्चा सिक लुकिंग है यहाँ पे भी, बट इतना ज़्यादा सिक लुकिंग नहीं है जैसा वो एक्यूट में है, क्योंकि क्रॉनिक है ना, ये क्रॉनिक तो ये ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज हो चुका है. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफरेंशिएट द हेपेटिक जॉन्डिस. Now, hepatic disease with the hemolytic disease. Now, this is another issues that you have to understand. Hepatic disease है, child is having jaundice, hepatic jaundice with the hemolytic disease. बच्चे को hemolytic disease है. Understand the problem very clearly. Hepatic disease means liver is involved. Hemolytic disease means excess amount of the RBCs are get destroyed, isn't it? Okay, now in the both the cases there will be liver and spleen enlarged. See, in the chronic hepatic jaundice cases, वहाँ पे भी मैंने बताया कि liver और spleen बड़ा होगा, ठीक है. और हमारा साथ hemolytic disorder है, वहाँ पे भी liver और spleen तो बढ़ता है, पहले spleen बढ़ता है और उसके बाद liver बढ़ता है. ओके, सो हाउ टू डिफरेंशिएट दीज टू, क्योंकि हम अब इस सिम्टम को ले रहे हैं, कौन सा सिम्टम को, लिवर हेपेटोस्प्लीनोमेगाली, इसको ले रहे हैं. हेपेटोस्प्लीनोमेगाली हिपैटिक डिजीज में भी मिलेगा अगर वो क्रॉनिक है तो, और हेपेटोमेगाली हीमोलाइटिक डिजीज में भी मिलेगा, एक्यूट या क्रॉनिक दोनों में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे तो आरबीसी डिस्ट्रक्शन हो रहा है, आरबीसी को डिस्ट्रॉय करते 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 वो मिलेगा, बढ़ेगा. कैसे डिफरेंशिएट करना है? अगेन वेरी सिंपल. इन हेपेटिक डिजीज ऑलवेज जॉन्डिस विल बी द मेन सिम्टम. ठीक है, हेपेटिक डिसीज की वजह से हिपेटोस्प्लीनोमेगाली आ रहा है तो वहाँ पे जॉन्डिस इज द मेन सिम्टम. अगर कल हमने देखा था हीमोलाइटिक डिजीज की वजह से अगर आपको हेपेटोस्प्लीनोमेगाली आ रहा है तो वहाँ पे क्या है, पेलर इज द मेन सिम्टम. ठीक है, पेलर इज द मेन सिम्टम. दिस वी हैव ऑलरेडी सीन इन द लास्ट क्लास, बिकॉज हीमोलाइटिक डिजीज जॉन्डिस इज नॉट द फर्स्ट साइन, हीमोलाइटिक डिजीज ऑलवेज पेलर इज द फर्स्ट साइन. ठीक है, liver disease always the jaundice is the first sign. Jaundice is first symptom. Okay, so now in hemolytic pallor will be there as a main symptom. Another important, this is one important point that you have to differentiate. Another is दोनों के बीच में कैसे differentiate करेंगे? अगर hepatic है, हाँ पक्का jaundice is the main symptom, but along with that child is sick looking because liver is getting involved. Whereas in hemolytic disease पेलर इज देयर, बट लिवर कहाँ इन्वॉल्व हुआ है? लिवर तो इन्वॉल्व हुआ ही नहीं है ना ज़्यादा, बेसिकली तो स्प्लीन इन्वॉल्व हुआ, उसके बाद लिवर में आएगा वो. ठीक है, सो यूजुअली फंक्शनल कैपेसिटी ऑफ द लिवर इज नॉर्मल इन केस ऑफ हीमोलाइटिक कॉसेस. बहुत क्रॉनिक हो गया, बहुत पुराना डिसीज है, सीवियर डिसीज है, अलग बात है. अदरवाइज इट इज स्प्लीन है ना, उसको डिस्ट्रॉय करता है स्प्लीन, तो सबसे पहले तो स्प्लीन बढ़ेगा, उसके बाद लिवर में आएगा ना. तो यूजुअली देयरफॉर हीमोलाइटिक डिसीज में liver functions are maintained to some extent, or to a greater extent, whereas in case of hepatic disease liver functions are get affected. Another is in case of hemolytic jaundice, look into the color. Urine color and the stool color is normal along with the indirect bilirubin, and there may be some other complaints. Got it? ये तो हमने कल देखा था. Hemolytic jaundice, बहुत सारा आरबीसी डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत सारा इनडायरेक्ट बिलिरुबिन आ रहा है,
लिवर में। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन क्या है कि टॉक्सिक है और वाटर इंसॉल्युबल है, तो इसलिए यूरिन में वगैरह आने का सवाल ही नहीं है। तो यूरिन का कलर और स्टूल का कलर वो तो नॉर्मल रहेगा, ओके। एंड उसके साथ इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा और बाकी भी कुछ सिम्टम हो सकता है जैसा पेलर वगैरह। वेरएज लिवर का प्रॉब्लम है, इसमें क्या होगा, देयर विल बी इनडायरेक्ट बिलिरुबिन एंड देयर इज नो पेलर एंड देयर इज नो अदर सिम्टम, ठीक है। सो दिस इज वन थिंग, दैट मीन्स अगर लिवर का प्रॉब्लम है तो मतलब हेपेटोसाइट का इन्फेक्शन है, तो उस टाइम में क्या होगा, आपको डायरेक्ट बिलिरुबिन का अमाउंट ज़्यादा मिलेगा, 20% से वो ज़्यादा, मैंने जो बताया था वो ज़्यादा मिलेगा और बच्चा सिक रहेगा और ये पेलर वेलर सब नहीं रहेगा। बट लिवर का प्रॉब्लम है जिसमें एंजाइम डिफिशियंसी है, लिवर का ही प्रॉब्लम है बट एंजाइम का डिफिशियंसी है, उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे हिमोलाइटिक डिसऑर्डर से। यहाँ पे इनडायरेक्ट बिलिरुबिन बढ़ेगा बिकॉज कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा है। सी दिस इज अ वेरी स्मॉल पॉइंट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है। हेपेटिक वो इन्फेक्शन की वजह से है तो एक अलग ही प्रेजेंटेशन है, लिवर इन्वॉल्व है बट इन्फेक्शन नहीं है, एंजाइम का डेफिशिएंसी है जो हेरिडिटरी है, तो वहाँ पे क्या होगा, जितना भी आपका बिलिरुबिन आएगा इनडायरेक्ट, उसको कॉन्जुगेशन करने के लिए एंजाइम है ही नहीं है, तो बढ़ेगा क्या, डायरेक्ट बढ़ेगा कि इनडायरेक्ट बढ़ेगा, इनडायरेक्ट ही बढ़ेगा क्योंकि वैसे ही पड़ा हुआ है। सो ऑल्दो इट इज अ हिपैटिक प्रॉब्लम, if the cause is enzyme deficiency, it direct will not going to increase, indirect will going to increase because other other functions of the liver is normal, only वो enzymic नहीं है बस, okay। So this is how you have to differentiate between the hepatic disease with the hemolytic disease. Now one more important thing is hepatic disease with the hemolytic disease about the urine. What is that? Urine is high colored and stool is normal. Urine is high color, concentrated urine, and stool is normal. This can occur in hepatocyte disease. Okay, and the child will be sick even with the mild jaundice and a very short prodromal of the disease like hepatitis A or E में जो मिलता है, that will be seen. But growth is not much affected. Even in metabolic disorders and other infections like Wilson's also, growth is not much affected. Okay, so this is another important point related to urine because urine is always confusing here. Okay, now we look into the other aspects now. Hepatocyte disease of long duration, jaundice देखना है हमें। हेपेटोसाइट डिसीज लिवर का है बट बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का है, 7-8 महीने से है, ठीक है, 6-7 महीने से है, एंड जॉन्डिस इज ऑल्सो देयर। नाउ यू हैव टू थिंक अबाउट हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, सम मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, फॉर एग्जांपल विल्सन्स डिसीज, नाइमन पिक्स डिसीज, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स है, स्टोरेज डिसऑर्डर्स है, metabolic cirrhosis, autoimmune disorders, okay। So hepatocyte disease of long duration, then you have to think about hepatitis B, C, metabolic disorders etc, or some of the autoimmune disorders also। But how to understand, अगर वो long duration है, effect कौन हुआ है, liver हुआ है, liver सबसे बड़ा factory है, वो long duration से चल रहा है, तो definitely there will be poor nutrition, especially protein deficiency will be there, okay। So there will be poor nutrition and affliction of the growth will be there, then you have to go for the growth chart, ठीक है। जॉन्डिस है बच्चे को, लॉन्ग हिस्ट्री है, देखो ग्रोथ अफेक्टेड है, न्यूट्रिशन अफेक्टेड है, सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर हेपेटोसाइट डिसीज विद लॉन्ग ड्यूरेशन, ओके। नाउ सपोज एवरीथिंग इज नॉर्मल, ठीक है, बच्चे का ग्रोथ सही है और बच्चे का न्यूट्रिशन सही है, बच्चे का एक्टिविटी सही है, बच्चा हैप्पी लुकिंग है, एवरीथिंग इज नॉर्मल बट जॉन्डिस है, देन ऑलवेज थिंक अबाउट एंजाइम डेफिशिएंसी, ओके, ऑलवेज थिंक अबाउट एंजाइम डेफिशिएंसी। यू विल हैव ओनली माइल्ड टू मॉडरेट जॉन्डिस होता है, ठीक है, वो एक क्रिगन नजर नंबर 2 जिसमें जो है कंप्लीट ब्लॉकेज होता है, उसको छोड़ के बाकी सभी में जो है माइल्ड टू मॉडरेट जॉन्डिस होता है, बच्चा जॉन्डिस के साथ घूमता फिरता रहता है, कोई उसका इश्यू नहीं है। So that is always suggestive of enzyme deficiency because rest of the liver is normal.
Okay. Now, if the urine is high colored and stool is pale, what do you think? So, urine is high colored and stool is pale. So, this suggests that biliary disease. स्टूल इज पेल, बिलियरी डिसीज, बिलियरी ऑब्स्ट्रक्शन है, इसलिए स्टर्कोबिलिटी नहीं गया है. ठीक है. सो बिलियरी डिसीज विद अ नॉर्मल हेल्थ. सो बट disproportionate severe jaundice will be there with the itching. So in case of biliary disease, baby is not sick looking. We already explained. Okay, it is normal health because ब्लॉक हुआ है बिलियरी ट्रैक्ट में, बाकी लिवर में कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो यू विल हैव डिसप्रपोर्शनेट सीवियर जॉन्डिस. क्या होगा कि बच्चा जो है हैप्पी लुकिंग है, एक्टिव है, बट जॉन्डिस बहुत ज़्यादा है. मदर बहुत वरीड है, सर है तो ये घूमता फिरता अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है, बट जॉन्डिस जो है डेली बढ़ रहा है, वो तो बढ़ेगा क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन है ना. ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज डिसप्रपोर्शनेट सीवियर जॉन्डिस विल बी देयर विद सीवियर इचिंग. इचिंग तो रहेगा, बट फिर भी चाइल्ड इज हैप्पी लुकिंग. इचिंग से थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, अदरवाइज not sick looking, and there will not be any hepatomegaly. Only later stages there may be affliction of the liver, बहुत chronic obstruction ऐसा हो गया है जैसा आपका ये कोलेलिथियासिस, इसमें सब जो होता है, then it can occur. Otherwise there is no hepatomegaly. Hepatomegaly नहीं है. right hyper quadrant area में, right quadrant area में जो है, हाइपोकॉन्ड्रिक एरिया में जो है, सो देयर इज नो मच टेंडरनेस, ऐसा कुछ नहीं है. बेबी is happy looking. So that is a very typical. And the stool is pale, tila pista niba. So that's a typical of obstructive jaundice. Now, usually in case of biliary disease, initially there is no hepatomegaly, but when it progresses there may be hepatomegaly. जैसा मैंने बताया, गाल स्टोन है, फाइब्रोसिस है, ऑब्स्ट्रक्शन बाय द हेड ऑफ द पैंक्रियास, तो वहाँ पे सब हेपेटोमेगाली आ सकता है लेटर स्टेज में, और शुरू में जैसे एक्यूट स्टेज में तो कुछ नहीं होगा. वन ऑफ द कॉमन कॉज इन चिल्ड्रन स्पेशली न्यू बॉर्न वेयर द बिलियरी डिसीज इज देयर, ओके, बिलियरी ट्रैक्ट इज अफेक्टेड, दैट इज कॉल्ड एज बिलियरी एट्रेसिया. न्यू बॉर्न में जो है बिलियरी ट्रैक्ट ठीक से बनता ही नहीं है. Okay, so we have also discussed one case on this previously. Okay, biliary atresia. This is one of the congenital problem where biliary tract itself is not properly formed. तो bilirubin कैसे आएगा? So most common is biliary atresia. By the time we diagnose the biliary atresia in a newborn, that time the hepatomegaly develop because of the back pressure. Usually बच्चों में जब biliary atresia हम देखते हैं, तो जब हम देखते हैं 10-15 दिन के बाद जब हम diagnose कर लेते हैं, so by that time hepatomegaly develops because of the back pressure. But otherwise in बड़ा बच्चों में जो है इतना जल्दी hepatomegaly नहीं आएगा, but long standing case में आ सकता है. Okay, so how does we finally do? We need to correlate the age. So what is important is age को consider करना है हमें. Onset that we have to understand. Then duration, acute है, chronic है, वो हमारे लिए important है. Progress कैसे वो इम्पोर्टेंट है. न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द बेबी, दैट इज इम्पोर्टेंट. हैप्पी लुकिंग और सिक लुकिंग चाइल्ड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रोथ, वो भी हमें क्रॉनिक से डिफ्रेंशिएट करने के लिए इंपॉर्टेंट है. लिवर एंड स्प्लीन एनलार्जमेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. पेलर hemolytic disease, पेलर इम्पॉर्टेंट. एंड अदर साइंस ऑफ द हेपेटोसाइट डिजीज लाइक इचिंग हो गया, और प्रोटीन डेफिशिएंसी हो गया, ठीक है, पुअर न्यूट्रिशन हो गया, एडिमा because of the lack of the proteins, there may be edema. Portal hypertension, that we will see later, portal hypertension and liver cell failure. These are some of the other issues that you have to see. But this is in general a very brief and short approach to the hepatic diseases.